And since I think the examinations are very near, that is why I'll be discussing mostly PYQs, okay, previous year questions rather than the questions from NCERT. Now, NCERT question, if you have any if you have any specific doubts, you can ask those. Otherwise, we will just do the previous year questions. This one. Just give me a minute. Try this question. So this question is directly from Henry's law. They are asking you to state the Henry's law, and then you have to calculate the solubility of CO2 in water at 298 Kelvin under 760 mmHg. Okay. So what is the Henry's law? Henry's law says that the partial pressure due to a gas solute inside a solution will be equal to the Henry's constant Kh multiplied by mole fraction of the solute. Now this mole fraction of the solute is what? It is the number of moles of solute in inside the solution divided by the total number of moles of the solution. So this chi b represents solubility. Solubility is basically concentration of CO2. अगर solubility पूछना ना यानी कि कितना CO2 dissolved है. So the amount of CO2 dissolved in water, that is concentration. So जब भी solubility की बात है, they are talking about the concentration. ठीक है. अब यहाँ पे chi b आपको निकालना है. Chi b it will be equal to the pressure divided by Kh. So the pressure is 760 mmHg divided by Kh is 1.25 into 10 to the power 6 minus 6, 6 mmHg. mmHg will be cancelled by each other, and then you can calculate this. Please calculate this, send the answer on the Zoom chat.
Guys, not got any answers. Seven sixty upon 1.25, it is 608 into 10 to the power minus 6 हो जाएगा ये. So I can write this as 6.08 into 10 to the power minus 4. So this is the solubility of CO2. Please copy this down. See next question. Heptane and octane form an ideal solution at 373 Kelvin. The vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? Tell me guys, कैसे हुआ ये सवाल? अरे किसी को नहीं आ रहा क्या? अच्छा, सवाल लिख के बताइए भाई. कुछ आप लोग का आंसर देना पड़ेगा, ऐसे फिर क्या ही फायदा. हम ही सवाल लेके आए, हम ही आंसर बताते रहे सब आप लोग बस बैठ के देखते रहिए. इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू गाइस ना. थोड़ा दिमाग लगाइए. कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. हमारे पास तीन है, ध्यान दे दीजिएगा जरा. अगर आपके पास वी हैव सॉल्वेंट लिक्विड होगा हमारे पास. इफ यू ऐड गैस प्लस लिक्विड देन हेनरीज लॉ. If you add liquid plus liquid, then it will be Raoult's law. And if you add solid inside liquid, then it is going to be relative lowering of vapor pressure. तो ये आइडेंटिफाई करना है आपको कि किसका सॉल्यूशन है. गैस और लिक्विड का है, लिक्विड लिक्विड का है या सॉलिड लिक्विड का है. थोड़ा सा आपको अंदाजा लगना चाहिए कि जब ये आइडियल सोल्यूशन बोल रहा है तो आइडियल सोल्यूशन इट फॉलोज अ पर्टिकुलर लॉ. कौन से लॉ को फॉलो करता है? यस करेक्ट पार्कर, इट इज लिक्विड लिक्विड है ना, रॉल्स लॉ. तो द रॉल्स लॉ इज व्हाट? रॉल्स लॉ सेज दैट द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू. अच्छा, अब एक बात बताइए, कितने लोगों को न्यूमेरिकल वाला रॉल्स लॉ याद है? हमने लिखाया था न्यूमेरिकल के लिए आपको एक रॉल्स लॉ यूज करना है. कितने लोगों को याद है ये? फॉर न्यूमेरिकल्स लिखा होगा. ये देखिए, ये भी नहीं रहा है किसी को. ठीक है, देखिए. सो वी पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी multiplied by chi b. Multiplied by chi b. This is the Raoult's law that you are going to use. This is basically for numericals. किस लिए कहते हैं? क्योंकि आसानी हो जाएगी. You just need to calculate the chi b. P नॉट ए, P नॉट बी वगैरह दिया रहता है आपको. देखिए, आपको दिया हुआ है ना, 105.2, 46.8 kilopascal. All of these things are given to you guys. You just need to calculate the chi b. Chi b क्या होता है? Chi b, it is equal to number of moles of the solute divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute. Number of moles of solute और solvent निकालना पड़ेगा आपको. Number of moles of अब heptane and octane निकाल दीजिए. Number of moles of heptane will be equal to how much? Number of moles of heptane 26 divided by the molar mass of heptane. What is the formula for heptane? अब ये सारी दिक्कत आप लोग को आने आ जाएंगी जनरली. ठीक है. मोलर मास ऑफ हेप्टेन कितना होगा? फॉर्मूला होता है इसका कितना? C7H16, राइट? C7 2N+2 है ना? C7H16. Yes, sir. अब कितना हो जाएगा ये? 40 7 12 12 7 will be equal to how much? 84 plus 16 will be equal to 100. And number of moles of octane, तो होमोलोगस सीरीज में जो मॉलिक्यूलर मास का फर्क होता है दैट इज 14.
ठीक है, CH2 बढ़ जाएगा, सॉरी 25 नहीं, कितना 35 है, डिवाइड बाई 35 डिवाइड बाई 114। ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन एंड ऑक्टेन। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट दिस। ये तो आपके पास 0.26 हो जाएगा। व्हाट विल बी दिस? 35 upon 114, दिस इज 0.31। ठीक है, अब इसमें से व्हाट इज गोइंग टू बी सोल्यूट एंड व्हाट इज गोइंग टू बी सॉल्वेंट। तो जो कम होता है ना, उसी को आप क्या लेते हैं, वी जनरली टेक दैट एज द सोल्यूट। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द काई ऑफ हेप्टेन विल बी इक्वल टू काई ऑफ हेप्टेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन इज 0.26 डिवाइड बाय 0.26 plus 0.31. This will be equal to 0.26 divided by 6 plus 1 7, 3 plus 2 5, 0.57। ठीक है, so this is the ratio we are getting for chi b। अब p total निकल जाएगा आपके पास, p total will be equal to p naught a। अब ध्यान रखिएगा, what is p naught a? p naught a आपके पास कौन सा है? a है ऑक्टेन। तो वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स हेप्टेन एंड ऑक्टेन, हेप्टेन कितना, ऑक्टेन का 46.8 माइनस 46.8 minus 105.2 into 0.26 divided by 0.57। कैलकुलेट कीजिए उसको। Once you're done, send the answers on my WhatsApp। बहुत टाइम लग रहा है कैलकुलेशंस में।
Anyone got the value? Please send your answer on the Zoom chat. Oh, no one is getting the answer. The gigs you will get, I have calculated 77.44. This will be kilopascal. 73. Sorry, yeah, 73. My bad, my bad. Yes, Safia, that's fine. 73.44. It will be kilopascal. Okay. Also, please write the units. If you don't write the units, it will be marks will be deducted. जो major numericals आपके पास आएंगे, that will be from the colligative property. So let us move into that part. Change that to bar. Can you please turn your mic on, Fadil? Yes, sir. Why bar? Sir, because I remember seeing similar numericals. After we write it in bar, 1 No, kilopascal, 0.01 bar. no, you don't need to. No need to Okay, okay, sir. convert it into bar. See, बार में कन्वर्ट करने की जरूरत तब पड़ेगी इफ द इक्वेशन रिक्वायर्स, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन में सी ये भी है आपके पास, दिस इज आल्सो इन किलोपास्कल, दिस इज आल्सो इन किलोपास्कल, एवरीथिंग इज इन किलोपास्कल, सो इट्स नॉट गोइंग टू Yes, मैटर, sir. इट्स नॉट गोइंग टू मैटर Okay, आल्सो काई भी इट इज इन, इट इज नॉट हैविंग एनी यूनिट्स, ठीक है. okay, sir. Try this one. 30 gram of urea is dissolved in 846 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution if the vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. अब यहाँ पे आपको फिर से वही सेम थिंग, विच इज व्हाट इज द सोल्यूशन. आपके पास गैस और लिक्विड का सोल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है या फिर सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन है, और उसी के हिसाब से यू विल अप्लाई हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है. तो आपको ये बताना समझना होगा यहाँ पे कि यूरिया जो है इट इज गोइंग टू, इट इज अ सॉलिड और इट इज अ लिक्विड और इट इज अ गैस. क्या ख्याल है आप लोग का? यूरिया. Solid. Yeah, very good. Correct. Urea is
सॉलिड। ठीक है, सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? P naught of the solvent minus the pressure of the solution divided by P naught A, it is equal to chi B। ठीक है, दिस ये तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या है आपके पास, दिस इज द फॉर्मूला। बट चलिए इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। कैन यू कैलकुलेट द वेपर pressure of water for this solution? You have to calculate the vapor pressure of the solution. If you remember, I gave you guys a formula for the numerical। अगर RLVP का numerical आ जाए तभी कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? किसी को याद है कौन सा फॉर्मूला यूज करना? नहीं। You need to calculate the P total। काई भी कैलकुलेट कर लीजिए पहले। Number of moles of the water solvent will be equal to 846 divided by 18। Number of moles of solute will be equal to 30/60, है ना? यहाँ से आपके पास काई भी आ जाएगा। 18 how much? 846। This is 47। This will be 0.5, 1 by 2। So 1 by 2 whole thing divided by 47 plus 1 by 2, this will be equal to how much? 0.5 upon 47.5। 47.5 को डबल कर दीजिए, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 94। 1 अपॉन 94 इज द काई बी। पी नॉट आपके पास दिया हुआ है कितना? 23.8। सो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। P naught A upon P naught A is equal to P total, sorry, minus P total upon P naught A is equal to chi B। और P naught A 1 हो जाएगा, और 1 को उधर ले जाएंगे हम, या फिर P total इधर ले आते हैं। हाँ, सो 1 माइनस chi B इक्वल टू P total अपॉन P naught A। 1 माइनस chi B कितना होगा? 1 अपॉन 94, तो 93 अपॉन 94 हो जाएगा। क्या ख्याल है? 93 अपॉन, देख लो भाई, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 94 है, इक्वल टू पी टोटल अपॉन पी नॉट ए। आंसर आ गया क्या किसी का? हाँ, वी कैन यूज दैट आल्सो, नंबर ऑफ मोल्स वाला भी। नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 93 अपॉन 94 इज इक्वल टू पी टोटल अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, और पी नॉट ए आप लोग को दिया हुआ है, दैट इज 23.8। तो पी टोटल कितना हो जाएगा? 23.8 इंटू 93 अपॉन 94, 23.8 है। कैलकुलेट द पी टोटल। पी टोटल, हाँ इट्स फाइन। 93 अपॉन 94 जीरो पॉइंट कितना हो जाएगा? 93 94 0.99, अप्रोक्सीमेटली 22 23 के करीब आएगा ये। 93 अपॉन 94 इज इक्वल टू 0.99 अप्रोक्सीमेटली, मल्टीप्लाइड बाई 23.8, 23.5 आ रहा है। दिस विल बी mmHg। तो इन दिस यू हैव टू जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड कैलकुलेशंस करनी है। किसी में बहुत ज्यादा, मतलब देयर इज नो टफ कैलकुलेशंस, कहीं पे भी ऐसा कोई ट्रिकी सवाल नहीं है इस तरह का।
Yeah, please copy. Parker, let me know once you're done. Done. Okay, a few people are remaining. That's right now. Mariam, Khatun or Parker? Parker, have you joined with? Did you join with two devices? Yes, sir. अच्छा लिख लिया आपने? 1 minute. ठीक है. We'll try this. Now, this question is going to be a bit. It's not a very direct question जिसमें आप फॉर्मूला लगा के सिर्फ आंसर लिख लें. ठीक है. थोड़ा सा यहाँ पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा. ठीक है. A bit of effort. Please write this question. सवाल लिखिएगा. हाँ. 5% aqueous solution of a non-volatile solute was made and its vapor pressure at 373 Kelvin. ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. 373 Kelvin.
was found to be 74.745 mm. Vapor pressure of pure water at this temperature was 760 mm. Calculate the molar mass of the solute. इस क्वेश्चन को थोड़ा और टफ भी बनाया जा सकता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस डाउन एंड एक दो लोग बस हाथ रेज कर लें इफ यू हैव रिटन दिस क्वेश्चन डाउन. ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, ठीक है. डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट लिसन. एक सबसे पहले 5% aqueous solution of non volatile. अब ये 5% है क्या? जब वो कुछ ना दिया रहे हैं ना, इफ दे आर नॉट गिविंग वेदर मास बाय वॉल्यूम है, मास बाय मास है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो जिसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा आप उसी को लीजिए. सबसे ज्यादा फायदा है मास जानने में. once you know the mass और आपको ये पता है that non volatile solute RLVP मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, एंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स यू नीड द मोलर मास. ठीक है, तो फॉर नंबर ऑफ मोल्स यू नीड द मास एग्जैक्टली, नॉट द वॉल्यूम एंड एवरीथिंग. तो 5% सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, 5% W/W. इसका मतलब 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. तो हम लोगों को अब कुछ चीजें पता है दैट द weight of solute we are using is 5 gram. The mass or weight of solvent we are using is 95 gram. ध्यान से देखिएगा, है ना. solute जो है ना, solute 5 ग्राम, solvent कितना, 95 ग्राम. The molar mass of the solute we don't know that, ये निकालना है आपको. molar mass of the solvent it is equal to how much? It is equal to 18 grams. ठीक है, ये सारी चीजें तो हम लोगों को अभी यहाँ से कम इतना आप लोग को एक्सपेक्टेड है कि आप दिमाग लगा लें. अब एक चीज हम आपको बता रहे हैं that made its vapor pressure at this was given at 745 mm. ठीक है, आपको ना वाटर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर वाज 760 mm ये नहीं भी दे सकता है. इवन इफ दे आर नॉट गिविंग यू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तब भी आपसे ये सवाल होना चाहिए. क्यों? बिकॉज दे आर सेइंग द टेम्परेचर इज 373 केल्विन. 373 केल्विन सेल्सियस में कितना होगा? सेल्सियस में कितना होगा 373 केल्विन? बोलिए, जल्दी बोलिए गाइस. 373 केल्विन इट इज इक्वल टू हाउ मच? अरे बहुत आसान कैलकुलेशन, इतना टाइम क्यों लग रहा है? माइक ऑन करके जल्दी बताएं. 373 केल्विन इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस? बड़ा टाइम लग रहा है भाई. चलिए, 1 कैसे होगा? 100 होगा ना मरियम. मरियम यार, इसमें ये नहीं होना चाहिए ना. अब इसमें हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? यस, क्या यस? 1 क्यों लिखा था फिर आपने भाई? ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है. इतना तो आप कम से कम अपने दिमाग को चालू करके रखें कि ये डिग्री सेल्सियस केल्विन में गलतियां ना हो. 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट में वाटर का, या फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ही होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी सॉल्वेंट, नो मैटर व्हाट सॉल्वेंट यू आर ड्रिंकिंग, सभी सॉल्वेंट का जो प्रेशर होना चाहिए कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? द वेपर प्रेशर इज 1 atm. और अगर एमएमएचजी की बात करें, 1 atm ही क्या होता है? 760 mmHg. ठीक है, तो अगर उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है, देन प्लीज रिमेंबर, इफ दे आर सीइंग 100 डिग्री सेल्सियस है, या फिर वो बोलते हैं कि एट टेम्परेचर विच इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट, ये और हार्ड कर देना सवाल को. टेम्परेचर भी नहीं दे रहे हैं, जितना लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पे इतना एक्सपेक्टेड है. मतलब एक्सपेक्टेड इन द सेंस कि आपसे अगर सवाल दे दिया जाए तो आउट ऑफ सिलेबस आप नहीं कह सकते इस चीज को, बिकॉज यू नो दैट बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू 1 atm. और बाकी सारे 1 atm के बाद आप किसी भी यूनिट में चेंज करा लें. 1 atm आपको पता है 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg. दिस इज ऑल थिंग्स आर एक्सपेक्टेड. भले ही इतना हार्ड सवाल नहीं आएगा, लेकिन बनाया जा सकता है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो पाएगा. ठीक है, ध्यान दीजिए. तो आपको तो खैर दिया हुआ है यहाँ पे ना, P0A दिया हुआ है, दैट इज P0A is 760 mmHg.
अब यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेंगे, वी विल यूज द फॉर्मूला दैट इज, हमारे पास एक फॉर्मूला आया था अगर आपको ध्यान हो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, दिस इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ठीक है, इसी को हमने एक्सपैंड करके लिख दिया। दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टोटल डिवाइड बाई पी टोटल। ठीक है, डब्ल्यू बी क्या हमारे पास है, जी हाँ है 5 ग्राम्स, इनटू एम ए है, जी हाँ है एम ए मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू 18 ग्राम, डिवाइड बाई एम बी, नो वी डोंट हैव एम बी, do we have WA? Yes, we have WA. WA is equal to 95. This will be equal to P naught A. P naught A क्या है हमारे पास, yes, 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 760 minus P total after the solution का 745 whole divided by 745। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा, हम लोग को एमबी निकालना है, तो एमबी के लिए आप इसको कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। हम 5 19, सो 18/19 है, एमबी उधर जाएगा, ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। सो 760 माइनस 745 कितना हो जाएगा, 15। सो 745 इंटू 18 डिवाइड बाई 15 इंटू 19, दिस विल बी इक्वल टू एमबी। मेक सेंस, यस और नो प्लीज टेल मी गाइस। क्वेश्चन पे आ गया आपका, ठीक है, वेरी गुड, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आई थिंक कृष्णा प्रिया योर आंसर इज राइट। कॉपी दिस डाउन एंड यू कैन 52, 52 नहीं आएगा, नो सफिया नॉट 52, 52 इज टू लार्ज, 50 से तो कम होगा, 50 से कम ही होगा। 745 अपॉन 15 इटसेल्फ इज 50। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर 750 ले लें हम ना, इफ लेट अस सपोज 745 को आप अज्यूम कर सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 750, तो 15 5 75, 50 हो जाएगा वो, तो दैट अप्रोक्सीमेटली वो 49.5 के करीब आना चाहिए। 5 घटा दें इधर, हाँ 45, 49.5 से थोड़ा ज्यादा, into 18 upon 19, 18 upon 19 will never be greater than 1, it will be always smaller than 1 because numerator छोटा है denominator से। ठीक है, so it will be for sure 50 से कम होगा। That's why I said Krishna Priya has got the right answer। I hope, मतलब ठीक है, मतलब वो आंसर हो सकता है अगर सही से कैलकुलेट कीजिए आप। अब्रप्ट मतलब उसको पूरा ऐसे रॉन्ग नहीं कहा जा सकता। कृष्ण प्रिया, आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट, सही से कैलकुलेट कीजिए सफिया। 47.05, हाँ ठीक है, दैट इज ऑल्सो क्रेडिबल, लेकिन ठीक है चलेगा, उतना ठीक है, फाइन, हो सकता है।
कैलकुलेशन में उतना थोड़ा सा ऊपर नीचे मिस्टेक चल सकता है, ठीक है, डोंट वरी सो मच। 47, लेकिन हाँ ऐसे देख के ही गलत नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो दिस इज 49.6, ठीक है, 49.6666 आ रहा है। 18/19 विल बी अप्रोक्सीमेटली वही 0.99 के करीब हो जाएगा, या फिर 0.98 के करीब होगा। 18/19 देख लेते हैं, 0.94 इट इज, 0.95 के करीब है। तो 49.6 इंटू 0.94, तो 47 के करीब आंसर आ रहा है, सही है। ठीक है, प्लीज कॉपी दिस डाउन। Raise your hand once you're done writing. Fadil and Parker just waiting for you guys. अच्छा, पार्कर का हो गया, फादिल जस्ट वेटिंग फॉर यू। नाउ एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। This was a question from the sample paper of last year. Just give me a second. देखिए, हम एक आप लोगों को बात बोलेंगे फॉर केस स्टडी बेस में। आप सवाल पहले पढ़ लिया कीजिए, पूरे केस स्टडी को पढ़ने से पहले सवाल पढ़ लिया कीजिए। On one temperature in the second set of results does not fit the pattern. Which temperature is that? Justify your answer. Why did Hannah collect two sets of results in place of NaCl? If Hannah had used glucose, what would have been the melting point of the solution with 0.6 gram of glucose in it? What is predicted melting point if 1.2 gram of salt is added to 10 ml of water? Justify your answer. ठीक है, ये सारी चीजें सवाल पहले पढ़ लिया आपने, उसके बाद देखेंगे हो क्या रहा है। तो उन्होंने बोला कि Hannah is investigating the melting point of different salt solutions. He made a salt solution using 10 ml water with a known mass of NaCl. NaCl का I कितना होता है? 2 होता है. She puts the salt solution into a freezer and leaves it to freeze. She takes the frozen salt out of the freezer and measures the temperature when the frozen salt solution melts. She repeats each experiment. ठीक है, उसने रिपीट भी किया हुआ, ठीक है, वेरी गुड। We know that if we are going to add salt inside water, in water, then its freezing point is going to decrease. There will be depression in the freezing point. Freezing point क्या हो जाएगा? Depress होगा। अच्छा, freezing point और melting point में कोई फर्क नहीं होता है ना। Freezing point is from the perspective of water and melting point is from the perspective of the ice. ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। Now in the first experiment she used 0.3 grams and रीडिंग में आपके पास मेल्टिंग पॉइंट कितना आया? 1.9, 1.9, ठीक है भाई। 0.4 में 2.5, 2.5, ठीक है भाई। 0.5 में -3, ये तो ठीक है। -5.5, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, ये थोड़ा सा कुछ अटपटा है यहाँ पे। एक रीडिंग में -3 आ रहा है, दूसरी रीडिंग में -5.5, इट इज नॉट पॉसिबल। 0.6 में -3.8, -3.8, ठीक है। 0.8 ग्राम से 5.1 और यहाँ पे -5.1, ठीक है। 1 में -6.4, -6.3, ये भी ठीक है। So the first question, one temperature in the second set of result does not fit the pattern. Which temperature is that? So we'll
say that 5.5 minus 5.5 degree Celsius is that temperature. Justify your answer कि ये odd क्यों है? They are asking why it does not fit the pattern. You will say that because the delta TF here is even more than 0.6 and 0.8 gram, which is not possible. यानी कि 0.5 ग्राम में जो डिप्रेशन आ रहा है दैट डिप्रेशन इज ग्रेटर देन 0.6 एंड 0.8, दैट इज अगेंस्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक जितना ज्यादा आप यूज कीजिएगा सोल्यूट उतना ज्यादा वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू आएगा. सो फ्रॉम दिस केस यू कैन, ये हमारे पास ऐसा लग रहा है कि 0.5 ग्राम डालने से ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है रादर देन 0.6 एंड 0.8, which cannot be true. So this is the justification. Why did Henna collect two sets of result for better accuracy and precision? For better accuracy and precision. अगला है in place of NaCl, if Henna had used glucose, what would have been the melting point of the solution with 0.6 gram of glucose in it? ठीक है, तो ध्यान रखिए ग्लूकोज का I की वैल्यू होता है, I कितना होता है, I इज इक्वल टू 1. ठीक है, और NaCl का I कितना होता है, NaCl का होता है I इज इक्वल टू 2. तो NaCl में वट एवर वैल्यू वी आर सीइंग उसका हाफ हो जाता, बिकॉज नथिंग एल्स इज चेंजिंग. ना वो पानी चेंज कर रही है ना वो कोई और चीज चेंज कर रही है. सही है, यस और नो? मेक सेंस? ये चीज लेकिन हो सकता है यहाँ पे दैट 0.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज नहीं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीधा हाफ नहीं कर सकते आप, बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज गोइंग टू चेंज. मोलालिटी निकाल के आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो यू रादर हैव टू कैलकुलेट इट. ठीक है. What would have been the melting point of the solution? इन्होंने पूरा ही पूछ लिया. ठीक है, फिर तो आपको जवाब देना पड़ेगा कंप्लीटली. 2 मार्क्स का सवाल है ना? हाँ, ए बी सी, हाँ ठीक है, 2 मार्क्स का सवाल, तो फिर ठीक है, कैलकुलेशन की बात नहीं है. दे आर नॉट आस्किंग डायरेक्टली ना कि ज्यादा होगा या कम होगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, आपके पास के एफ है क्या? के एफ नहीं दिया हुआ है इन्होंने, वो लंबा सवाल हो जाएगा फिर. चलिए ठीक. या तो आप ये लिख सकते हैं 12 बी 0.6 ग्राम में कितना है, 3 - 3.8 ना, -3.8 नहीं, उससे थोड़ा कम होगा. ठीक है, खैर उसको हम लोग बाद में देख लेंगे. एक बार वी नीड टू कैलकुलेट दैट, केएफ निकाल के करना पड़ेगा. व्हाट इज द प्रेडिक्टेड मेल्टिंग पॉइंट इफ 1.2 ग्राम? ये अच्छा सवाल है थोड़ा सा कि अब 1 ग्राम तक तो दिया हुआ उन्होंने 6.4. ठीक है, 1.2 ग्राम में कितना होगा? ठीक, 1.2 ग्राम में कितना होगा? तो यहां से हम ऐसा देख सकते हैं 0.3 ग्राम्स में -1.9 था, 0.6 ग्राम में -3.8 है. तो जब हम इसको डबल कर रहे हैं 0.3 इंटू 2 0.6, -1.9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3.8. तो 0.6 का जब डबल कर दीजिएगा तो 1.2 ग्राम हो जाएगा. जब 1.2 ग्राम होगा तो 3.8 का भी क्या कर दीजिए, डबल. सो आप ऐसे लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज एडेड, कितना होगा, 3.8 इंटू टू, -3.8 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 7.4 -7.4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, -7.4 डिग्री सेल्सियस विल बी द मेल्टिंग पॉइंट. इसको एक बार कॉपी कर लीजिए जो भी कुछ हमने लिखा है. देन आई विल कैलकुलेट द सी पार्ट इन प्लेस ऑफ NaCl. अगर हम ग्लूकोज यूज करते तो क्या होता.
Raise your hand once you're done. Copy this, guys, quickly. You don't need to write the question completely, है ना? Just take a screenshot of the question, that will be enough. But हाँ, answers एक question number आपकी notebook में रहना चाहिए. Whatever question number is this? Waiting for Fadil and Krishnapriya. See, next is how to calculate this glucose thing, है ना? So there are a few things. 0.6 grams वाले के लिए देखिए, the delta TF अगर हम ले, if we take for NaCl, then it will be equal to 2 into 2 is the I into Kf of the water multiplied by Wb into mass of the solute, that is 0.6 gram.
into 1000, the whole thing divided by molar mass of water is going to be 18 multiplied by 10 grams. That is the mass of solvent we are taking. 10 ml water will be 10 gram. Density of water is 1 gram per ml. तो वही चीज अगर हम delta TF, if we are going to take for glucose, this will be 1 into kf of water into 0.6 into 1000 divided by 18 नहीं होगा, my bad. This will be NaCl का मोलर मास कितना होता है, सोडियम क्लोरीन 58 I think. मोलर मास ऑफ द सल्यूट यहाँ पे लेना होता है ना 58.5 I think so. Just calculated. ठीक है. Next is for glucose, the molar mass of the glucose is 180 into 10. That is the amount of solute we are taking. अब यहाँ पे एक चीज अगर आप देखेंगे, delta TF for NaCl, this was equal to how much? ना था NaCl का, this is minus 0.6 grams में minus 3.8. यहाँ पे कितना minus 3.8 ना minus 3.8, ठीक है, minus 3.8, और ये वैल्यू हम लोगों को निकालनी है. ठीक है. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू ना, यहां से आपके पास ये डेल्टा टीएफ निकालना है आपको. इसको अगर हम लिखते हैं डेल्टा टीएफ, ठीक है. एक चीज ध्यान रखिएगा, इन बोथ द केसेस केएफ इज सेम. तो आप ना इक्वेट कर सकते हैं इस तरह से कि फॉर दिस इक्वेशन केएफ क्या होगा, केएफ विल बी इक्वल टू माइनस माइनस 3.8 नहीं होगा, माय बैड, इट विल बी 3.8. 3.8 into 58.5 into 10. This whole thing will be divided by 2 into 0.6 into 1000. And for here also I can write kf will be equal to delta tf multiplied by 180 multiplied by 10, whole thing divided by 0.6 into 1000. ठीक है. अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. बोथ ऑफ दीज आर गिविंग अस द वैल्यू ऑफ kf फॉर वाटर. सो इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो ऐसे लिख लीजिए, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी. आपको ये दिखा 0.6 0.1000 विल बी कैंसिल, 0.6 1000 विल बी कैंसिल, ये 10 और ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. सो आपके पास बचेगा 3.8 into 58.5 is equal to delta TF of glucose into 180. So delta TF will be equal to 3.8 into 58.5. एक सेकंड, एक चीज मिसिंग हो गया. This will be divided by 2 also, and this will be 2 into 180. 2 यहाँ पे बचा हुआ था ना, 3.8 and 8.5 divided by 2 is equal to delta TF into 180. हाँ. So this will be the delta TF. ठीक है, इस पर जरा कैलकुलेट कर लेंगे हम. 58.5 multiplied by 3.8. This is 222.3. This will be 18 to the 36, 360. If you calculate 2.3 divided by 360, this is 0.61. Okay. So this is the value. We'll copy this much. Copy this. Raise your hand once you're done.
मतलब 0.61 केल्विन होगा ये, केल्विन नहीं सॉरी डिग्री सेल्सियस, माय बैड, केल्विन बोल दिए या डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। एंड उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट पूछा था, आप मेल्टिंग पॉइंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस 0 पॉइंट, एक सेकेंड क्या है यहाँ पे, हाँ इट विल बी माइनस 0.61 डिग्री सेल्सियस। ये मेल्टिंग पॉइंट माइनस में आएगा क्योंकि डिप्रेशन, वही डिप्रेशन का मतलब ही होता है कि कम हो जाना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, और कम होगा तो नेगेटिव में ही चला जाएगा। Waiting for Krishna Priya and Safia. एक बार हो सके ना तो, मतलब हो सके क्या, दिस शुड बी आल्सो इन द प्रिपरेशन कि आप एक बार सैंपल पेपर जरूर गो थ्रू कर लें, बिकॉज इन द सैंपल पेपर यूजुअली जो है ना, दे पुट अप थोड़ा चैलेंजिंग